everyone, this is Sidra Iqbal here. I'm super excited about this new series of conversations, Dove, No Damage Beyond Repair, in association with Express Tribune. The misconception about damage is that it is irreversible. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो हमें लगता है कि उसको सही करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है. But that's not true. In fact, every step in that direction matters and miracles are possible. The only thing that you really need is to be consistent. And in this series of conversations, we'll have women and guests who've done exactly that. जो आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे, उनके चैलेंजेस क्या थे, कहाँ-कहाँ दूसरों के रवैये या उनके अपने थॉट प्रोसेसेस डैमेजिंग थे, and how were they able to overcome that. My first guest today is someone who's a dear friend, a mental health advocate, and she's also an associate clinical psychologist. इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में किस डैमेज को ये रिवर्स करके रिपेयर कर चुकी हैं, and what is her advice to people who are seeking to do exactly that. So let's welcome Rabia Najeeb. Hi Rabia. Hi Sidra. मुझे ये बताओ कि जब भी हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस की, how does it correlate to our self-image and particularly our appearance? Okay, so see, सेल्फ इमेज का जो साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट भी होता है वो यही होता है कि आप अपने आप को किस तरह से परसीव करते हैं, राइट? सो इफ़ यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट हैव एनी सेल्फ एस्टीम, यू विल नॉट हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस, you will not be confident in the way you look, and that will actually impact the way you look at yourself, right? It's not really and it's obviously things to do with how people perceive you as well. लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरह से negatively perceive करेंगे तो obviously it's going to be a part of your persona. And Sidra, like it's like a ripple effect. So if you are like if you are negatively feeling something about your body image, वो क्या होता है कि वो आप जो है वो नेगेटिव होंगे, वो फिर आप ऑटो पायलट मोड पे फिर चले जाएंगे. एंड देन टू फील पॉजिटिव अबाउट योर नेगेटिव अबाउट योर बॉडी इमेज इज गोइंग टू बी अ टास्क. इट्स गोइंग टू बी. किसी ने बड़ी एक ज़बरदस्त एक्टिविटी मुझे पॉइंट आउट की थी, इन विच उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी अपीयरेंस के बारे में, चाहे आपकी आंखें हो, बाल हो, रंगत हो, व्हेन यू लुक बैक एंड यू कम अप विद द टॉप 3 वर्ड्स कि मेरे बालों को डिफ़ाइन करने के लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ. कभी मुझे लगता है मेरे बाल बहुत अनमैनेजेबल हैं, फ्रिजी हैं, बहुत रूखे हैं, बहुत पतले हैं. हम रियलाइज़ करेंगे कि ये लफ्ज़ हमारे अपने नहीं हैं. ये कभी ना कभी किसी ने हमें कहा है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे चाइल्डहुड में किसी ने हमें ये कहा है. लेकिन एक बिलीफ अगर नेगेटिव हो गई है अपने बारे में, क्या उसको बदलना पॉसिबल है और उसके स्टेप्स क्या होंगे? यानी अगर मुझे लगे या किसी को भी ये लगे कि दे आर नॉट वेरी प्रेजेंटेबल, दे आर नॉट वेरी एलोक्वेंट, या उनकी कोई भी कमी उनको फील हो रही हो और वो बिलीफ बन चुकी हो, यानी कई लोग समझते हैं ना कि मैं बहुत अनलकी हूँ और वो इसी तरीके से दुनिया को देखते हैं. इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल ये बिलीव्स जो है बदले जा सकते हैं. ऐसा नहीं होता बिल्कुल. हमारे अगर हम बायोलॉजिकली इसको थोड़ा सा समझे तो हमारे न्यूरल पाथवेज जो है वो ऑब्वियसली जब एक बिलीफ बन जाता है तो वो लॉक हो जाता है, लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए भी तरीके मौजूद होते हैं. जैसे हमारे थेरेपी में जो है एक बहुत एक लाइफ स्किल जो हम अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं, उसमें एक ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ऐसे शख्स की एग्ज़ाम्पल ले लें हु इज़ नॉट कॉन्फिडेंट विद देयर ओन हेयर टेक्सचर, ठीक है, उनको क्या होता है कि वी टीच देम हाउ टू ब्रेक दैट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस इन द सेंस दैट ओके दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर नेचुरल हेयर, एंड देन वी मेक देम लिस्ट डाउन सिचुएशंस एंड सिनेरियोज जिसमें वो अनकंफर्टेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माई हेयर टेक्सचर, राइट, सो on the top of my list would be going to an event or शादी हो, birthday party हो, anything of that कोई भी sort, social right? gathering. Absolutely. The second on my list would be, which would be a little less uncomfortable for me, would be a family gathering or a gathering of like close friends, close family, stuff like that. एंड देन उससे नीचे जो सबसे लीस्ट मुझे डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा वो ये होगा कि मैं एक 1-on-1 एक फ्रेंड के साथ किसी कैफ़े में जाऊँ विद माई नेचुरल हेयर टेक्सचर, राइट? सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट व्हाट वी डू इज़ हम लोग उनको टॉप टू बॉटम शुरू नहीं करवाते, हम कहते हैं आप बॉटम टू टॉप वर्क योर वे अप. So expose yourself into situation. It's like basically dipping your toe into water
bit by bit, yeah. And you know, like सबसे पहले आप अपने आप को like go out with your friend, have a one-on-one, like for coffee or anything, and then expose yourself, get comfortable with that, and then move on to the next step and to the next step. But Rabia, tell me something. I want to bring this closer to home. Yeah. और मुझे पता है कि जब भी आपकी मेरी बात होती है, you are full of wonderful tips and advice. How does Rabia herself feel about herself? You know, your self-image. क्या आपने कभी struggle किया कि आपको लगता हो कि you know किसी भी चीज़ को लेके कि यार ये इतनी अच्छी नहीं है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट बनाए से कि जब आप ये सोच रहे होते हैं तो आप अपने आप को किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं. कभी कंपैरिजन तुम्हारे जहन में आया? Absolutely, Sidra. So, you know, it's a very interesting story that I want to highlight. That growing up, I had very difficult hair. My hair were extremely frizzy, and my mom wanted to always keep my hair really short, like मेरे कानों तक. ठीक है? I don't know, it was a thing, whatever it was. So I remember when I was 13, 14 years old, और मेरे बाल ना फ्रिज की वजह से वो बहुत ज़्यादा you know fluff आ जाता था उनमें, so I would literally like बहुत ज़्यादा, you understand what I'm trying to say, right? Once I think I was 14 or 15 years old maybe, it was my cousin's wedding, so we were all out shopping, and वो दो औरतें हमारे थे थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी, and I heard them say कि ओ बेचारी के बाल तो देखो. Out. My confidence was gone. It was shattered. And then, you know, after that, obviously, it took some time for me to repair that. But what I did was that, and of course, my mom really helped me in all of this, was that एक तो सबसे पहली चीज़, I tried a lot of experiments with my hair. मुझे treatment करा दो, मुझे ये करा दो. I damaged my hair in the process. वो भी सही करवा लिया, सब कुछ किया. But then I realized that this is not me. What they said is not me. It's basically their perception of me or a certain hair type. लेकिन वो मेरी identity नहीं है. और दूसरी चीज़, I actually you know reflected on my values कि मेरे अंदर की strengths क्या है. So Rabia, I want to pick up on that story because the essence of it is also comparison. यानी जिसने ये जुमला तुम्हारे लिए कहा वो भी तुम्हें किसी ना किसी से compare कर रहा था. And the moment it was seeded in your head, एक filter आ गया, एक perspective आ गया कि अपने आप को दूसरों से compare करना है. You know, it reminds me a lot of times I'm asked this question कि Sidra, you interview so many people, some may be you know in a very intimidating position of authority. कुछ लोग आपसे ज़्यादा smart होते हैं, कुछ लोग आपसे ज़्यादा पब्लिक अपील रखते हैं, कुछ लोग आपसे ज़्यादा वेल्दी होते हैं, खूबसूरत होते हैं, एंड कंपैरिजन इज़ ओनली ह्यूमन. बट कंपैरिजन ओवर द बोर्ड कैन एक्चुअली स्टॉप योर ग्रोथ एंड इट कैन बी वेरी डैमेजिंग. अगर हर वक्त मेरे जहन में यही चल रहा है कि मैं एक जगह बैठी हुई हूँ और मेरे बाल दूसरे से कंपेयर करके कैसे लग रहे हैं, मेरी लुक्स उसके बेहतर तो नहीं है, मेरे कपड़े उसके जैसे नहीं हैं, ये जब थॉट आ रही हो तो क्या करें? सिद्रा, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स और सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं. सो किसी एक की अगर स्ट्रेंथ है, कोई किसी एक के पास आपसे ज़्यादा कोई एक चीज़ है या मुझसे ज़्यादा कोई चीज़ है, तो उनकी कोई ना कोई वीकनेसेस भी होंगी जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, राइट? एंड दूसरी एक चीज़, इफ़ यू आर लुकिंग एट समबडी, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि अगर आप किसी एक बंदे को विजुलाइज करें कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इस शख्स की तरह बनना है या लगना है, रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ टू देयर अपीयरेंस, वो किस तरह के इंसान है, वो अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, वो आपसे अलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड देन यू कैन मे बी टेक दैट पाथ. इफ़ नॉट, you are your own unique person and nobody can be a replica of that just like them. They are their own unique being and nobody can be a replica of them. Right? Rabia, I want to talk about control as well. मुझे ये बताओ कि हमारी closest relationships में हम अक्सर control exert करने की कोशिश करते हैं. हम दूसरे को वो बनाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है, और वो हो सकता है हमारे लिए किसी हिसाब से ideal हो. There are so many women who complain कि यार in my closest of relationships मेरे parents, मेरे बहन भाई, even my spouse is trying to change my appearance, trying to change my attitude. कोई मुझे कहता है ज़्यादा bubbly हो जाओ, कोई मुझे कहता है dress differently. This can be very damaging to a person's self-esteem. तब क्या करना चाहिए? Okay, so Sidra, see, इस situation में like a lot of clients do actually talk about this, that you know my husband wants me to be this, my father has certain expectations out of me that he wants me to be this.
बट इन दैट सिचुएशन सबसे पहली ये चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप खुद में डेवलप करेंगे ना, सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन द सेंस दैट डोंट बी योर क्रिटिक, बी योर कोच. यू नो, एक कोच, जब एक एथलीट का एक कोच होता है तो वो आपको जो है वो गुस्सा भी करेगा लेकिन सपोर्ट भी करेगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, लेकिन वो आपकी हर मिस्टेक पे शो अप करेगा. ही विल नेवर लेट यू बी अलोन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, यू नो, हैव एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप विद इन योरसेल्फ. What is the importance of patience for any desired results, for any kind of repair? रिश्तों को रिपेयर करना है, किसी सिचुएशन को सही करना है, किसी चैलेंज को पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाना है, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है राबिया? पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सिद्धा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट पेशेंट you will always be stuck in a hamster wheel, literally hoping for things to get done, and they won't get done because everything has a course of its own. Everything, हर चीज़ में एक time लगता है. If you are going to graduate in 4 years when it comes to bachelors, आप उन 4 साल में graduate करेंगे, चाहे आपको 2 साल में करना हो, चाहे आपको 1 साल में करना हो. हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, राइट? इवन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का, रिलेशनशिप्स रिपेयर करने का, अपने आप को रिपेयर करने का भी एक सिस्टम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है. एंड हर किसी की प्रोग्नोसिस डिफरेंट होती है. हो सकता है कि आप जिस लेवल पे प्रोग्रेस कर जाएं शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई विल रीच दैट लेवल. And that is exactly where the self-confidence is going to come into play, that I will be able to do this. But Rabia, tell me something. Calm demeanor, you are a clinical psychologist. मुझे ये बताओ, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या करती हो? Do you become like this goddess of destruction? Very interesting question. So, you know, when I was a teenager, I was a rebel. I wouldn't listen to my mother. I would be like, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना. But you know, growing up, I really anchored myself. And since I've adopted a lot of reflective practices, गुस्सा सबको आता है सिद्रा. But reflective practices से पता है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे अपने आप को anchor करने में बहुत help किया है. So whenever I get angry, I don't say anything. That's the first step I take. I don't say anything. I take my time. I do some deep breathing, you know, I take a few minutes to myself. Even if I don't have a few minutes, I take like a couple of seconds, get back in the reality and then think, how should I respond to this situation? And then I take it forward. मुझे ये बताओ कि जिस तरह आपने कहा कि career में your first choice was to be a lawyer, and interestingly now you're a psychologist and you counsel so many people. जो हमारे जहन में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं, मुझे लगता है दे कैन बी वेरी डैमेजिंग एज वेल. कि अगर वही वाली बात कि एक सेट बिलीफ है और आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो वेरी स्केरी. दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्राइंग टू डू दैट इज़ अ ब्रेव स्टेप दैट वी नीड टू टेक. तो जब जहन में ही गोल गोल आर्ग्यूमेंट्स चल रही हों, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं, और किसी और से आप नहीं लड़ रहे हैं, दिस इज़ अ बैटल विद इन. What are some of some of the tips and advice you can give to a person like that? Okay, in that case, you know, like हमारी language में इसको कहते हैं rumination, you know, like thoughts are just like going on and on and on, and you are just living in your thoughts and you're unable to come back to the reality, right? So the first and foremost thing that actually helps you unhook from those thoughts is meditation. If you do not meditate, if you do not know how to focus on your breath rather than your thoughts, you won't be able to ground yourself in the real moment. And that is something that I can effectively say that it has helped me, and it has helped my clients as well, you know, when they come back. But you know, one key element in all of this is that you have to show up every day, Sidra. You can't be like कि मैंने 2 दिन किया, मैं तीसरे दिन बोलूँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं कर रही. You know, it's almost as you have to build like a mental hygiene routine for yourself, just as you have a physical hygiene routine, right? जैसे you never go like, okay, I'm too tired, I'm not going to brush my teeth today, or I'm going to skip my shower today, you right? You go to a gym and think कि मैंने एक दिन workout कर लिया तो अब I'm fit. Absolutely. No, you have to show up each and every day for yourself to build that muscle. You know, meditation helps build that muscle that can actually anchor you and bring you back to your reality.
Tell me something. When we talk about our closest relationship, Yeah. यानी हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, चाहे उसकी सेल्फ इमेज का मसला है, वो अपने आप को लकी नहीं समझता, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट हो रहा है, अक्सर हमें उसको काउंसल करने का तरीका नहीं आता. हम उसको कहते हैं नहीं नहीं, यू नो, वी ऑलमोस्ट बिकम डिसमिसिव अबाउट व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू. कि एक लड़की है जो हमें लगता है कि बहुत खूबसूरत है, एंड इफ़ शी हैज़ एनी काइंड ऑफ बॉडी डिसमॉर्फिया, और उसको अपना आप खूबसूरत नहीं लग रहा, या उसको लगता है कि शी नीड्स टू चेंज द वे शी लुक्स, वी आर वेरी क्रूअल इन द वे वी काउंसल दैम. हम उसको कह रहे होते हैं नहीं नहीं, इट्स ऑल इन योर हेड, एंड ऐसा नहीं होता. उस वक्त हाउ कैन वी प्रैक्टिस कंपैशन, राबिया? That's a very valid point, Sidra, because a lot of times we forget empathy, we forget compassion. हम उनको जो है वो अपनी advices देने लग जाते हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, it's all in your head, it's this, it's that. But the first and foremost thing of compassion is to basically understand their situation, right? Put yourself in their shoes and think and imagine what they are going through, feel it, and then just tell them that, you know, I understand what you're going through and I'm here for any kind of support and my heart is open for you. In any way I can help you, just let me know. Take the back seat, do not jump in कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें. This is the worst thing that we can do to people. कोई ऐसा शख्स जो तुमसे बहुत करीब हो, जैसे यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन एंड दैट बिग डिसीजन यू वर टेकिंग, एंड किस तरह आपको अपने फादर को कन्विंस करना पड़ा. राबिया, कोई और ऐसा शख्स जिसकी एडवाइस को ना मानना बहुत मुश्किल था, बट यू डिसाइडेड कि ये डिफ़िकल्ट चॉइस है, ये टफ चॉइस है, लेकिन ये मैं करूँगी? I think in majority cases it was my dad, to be honest, because you know, like we have that kind of a relationship where he would tell me you have to do things a certain way, but then I have my things that, okay, you know, like with time I have built that muscle to actually tell him that no, you know, I want to do things this way, not this way. This was when I was getting my education, this was when I was getting married, because, you know, I wanted to marry a certain type of person, certain kind of person, and it took a bit of time to convince my dad. He did not approve initially. It's not about approving, but he did not have, you know, एक certain image होता है एक mind में कि वो convince वो नहीं थे कि ऐसा होना ऐसा. चाहिए. वो ऐसा नहीं था, you know, वो different था, but वो मेरे लिए अच्छा था. So, you know, like इस तरह से तो So yeah, I think. क्या रूट लिया? मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर रहा होगा. आपकी पसंद और आपके पेरेंट्स की पसंद बहुत सारी चीज़ों में एक जैसी नहीं होती है. I get that. तो कैसे कन्विंस किया और इसमें कितना टाइम लगा? अच्छा, it was basically a team effort. इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी. It was basically a team effort. So you know, my husband really made an effort to connect with my father in that way, and then, you know, I told my father, I addressed his concerns bit by bit. I never said that, okay, मेरी यही मर्जी है, मैंने यही करना है. नहीं, I was like, I'm going to convince him 110% before actually going for it, and took me a year, Sidra, to actually go through this process. But उनके जो भी concerns थे, हमने bit by bit address किए उसको. उनके जो भी concerns थे, उन्होंने फिर later on खुद भी देख लिया कि अच्छा, you know, like he obviously tested his waters also, and वो balance out हो गया था. तो then he was like, नहीं ठीक है, if that's my daughter's decision and if she's confident about that, then fine. Abhi, I have one more question about your own journey as a social media content creator. जैसे तुमने कहा कॉलेज में तो तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी, और फिर तुमने प्रोफेशन भी ऐसा चूज़ किया जिसमें तुम वन ऑन वन ज़्यादा बात कर रही हो. बट व्हेन एंड हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ रीचिंग टू अ लार्जर ऑडियंस केम थ्रू, और ये कितना आसान था तुम्हारे लिए, कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए? Oh, Sidra, it was a very tough journey, because when I was actually starting this, हुआ ये था कि this friend of mine had lost a parent, and I really supported him grief के time पे. मैंने उसकी, you know, grief counseling भी की थी in a friend's capacity जितनी मैं कर सकती थी. So he told me one day, he was like, Rabia, what are you doing with your life? I was like, what do you mean by that? He's like, you should get into this, because, you know, you have the knowledge, you have the potential, you can actually do this. And then the idea clicked to me. I was like, ठीक है, सही है, why not? But then I was like, you know,
मैं करूँगी तो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, बाकी प्रोफेशनल्स मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यू नो लाइक पाकिस्तान में इस लेवल की चीज़ कोई एज अ साइकोलॉजिस्ट कोई कर नहीं रहा है एज फार एज आई नो. तो आई वाज लाइक एंड आई वांटेड टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट्स एज मच एज आई कैन सो दैट मैं लोगों को बता सकूँ, सिखा सकूँ और लाइफ स्किल्स बता सकूँ. बट होता ये था सिद्रा, एवरी टाइम आई वुड मेक अ वीडियो इन माई इनिशियल डेज़ मुझे बहुत एंजाइटी होती थी. तो व्हाट आई वुड डू इज़, मैं अपने ओवर थिंकिंग होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, एक बहुत ही एक सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक थी जो मैं यूज़ करती थी, विच इज़ you take your hands and what you do is you close your eyes and you focus on the middle finger. You actually bring your energy back to your middle finger. It actually grounds you and puts you back. And every time I would be, चाहे वो वीडियो बनाने से पहले भी मैं करती थी, वीडियो पोस्ट करने से पहले भी मैं करती थी. This is very interesting because it reminds me of one of my own processes as well. मैं जब भी public speaking के लिए in my college days, in my school days, I would go up on the stage. तो मुझे ऐसा लगता था कि there would be a lot of tightness in my shoulders. I'm sure you can use them. Public speaking करें तो मेरे साथ ज़ोर से धक्का दे देना. वरना आप you can think about your fingers and you can bring your senses back and you can ground yourself. Absolutely. Rabia, what a fantastic opportunity it was to have this conversation with you. Thank you for all the wonderful advice, for sharing your personal experiences, and once again reiterating that no damage is beyond repair. लेकिन हाँ, इस repair की journey को शुरू करना बहुत important है. The miracles will happen, but you have to stay consistent and you have to be persistent about what you want. आपकी ideal situation आपसे दूर नहीं है, but don't make it into a pressure cooker for yourself. कि सब कुछ आज ही करना है, अभी करना है. Even the small steps, the very small baby steps, they matter. So until next time, take good care of yourself. We're going to be back with another story of repair and resilience. Until then, take good care of yourself. Khuda Hafiz.